Welcome back. This is What's Up University, Jhakasya Bakwas. My name is Rohini and with me Sachin Kalbag. Of course, हम आज के शो की शुरुआत नहीं कर सकते without congratulating everyone who's listening in, everyone who's watching us. We are so proud that we are now on the moon. Mubarak ho! Hi, There is no greater feeling than this, man. I mean, this is easily one of the greatest achievements that India as a country has achieved since independence. I mean, this is just too good. बहुत बड़ी बात है. My wife and I were holding hands and we were just crying. अच्छा, तो आप we were just crying. आप ये कर रहे थे क्या? We were like, मैं emotionally invested था इसमें. मतलब इतना मतलब चंद्रयान 2 के समय जो हम रोए थे कि वो क्रैश हुआ है, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई है, और उतनी ही ऑपोजिट 180 डिग्री ऑपोजिट खुशी कल हुई, और दोनों ही मतलब there were lumps in our throats. We started just weeping. We were holding hands. It was like it was like we were dating once again. How lovely. I must tell you, I had a very opposite experience जब moon landing या soft landing हुई थी चांद पर. First of all, let me remind my audience that the reason why it's such a big deal is that yes, this is our first ever rover जो चांद तक पहुंचा है, but दुनिया का वो पहला ऐसा रोवर है जो साउथ पोल में पहुंचा है. So we've actually crossed territories or gone somewhere nobody in the world has gone, which is why it's such a big deal. So, there are lots of reasons why we should celebrate. But I was stuck on Vashi Bridge. I just want to tell you, तो मैं इतने ट्रैफिक में अटकी हुई थी और मैं अपने मोबाइल पे obviously देख रही थी कि जब ये सॉफ्ट लैंडिंग हुआ. And in that moment, all I could think of was कि यार यहाँ पर हम चांद पर पहुंच रहे हैं लेकिन मैं घर नहीं पहुंच रही हूँ. So it was really funny because it was just a sense of perspective. And I was like, हाँ यार, वहां पे तो ट्रैफिक नहीं होता. So anyway, congratulations to everyone who's listening in at this point. It's an absolute pleasure to be the ones who are actually sharing this with you. By the time this podcast drops, it will be old news. लेकिन जब तक ये पॉडकास्ट ड्रॉप होगा तब तक फेक न्यूज तो चलता ही रहेगा. ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा न्यूज तो उससे मुकाबले में थोड़ा सा तो फेक न्यूज होना ही चाहिए ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द फेक न्यूज ऑफ द वीक. द फर्स्ट पीस ऑफ फेक न्यूज इज इवन बिफोर द चंद्रयान लैंडेड. Alright, there were images, okay, that were being circulated. ये कहते हो कि ये चंद्रयान 3 के कैमरा से शूट किया गया है. And I want to show that image. It's probably come to you as well on WhatsApp. ये वाला इमेज जहां पर आप देखते हैं कि चांद जो है वो उग रहा है और पीछे से आप देख रहे हैं कि this is, I'll try and mute this so you can see it. Yeah, can you see this image? This specific image has been doing the rounds on social media. Also craters of the moon कि चलो यार, अगर हम गए हैं चांद पर तो जाहिर सी बात है हमको craters तो दिखने ही चाहिए. And the one, what's common between Mumbai roads and the moon? Potholes, yay. All right, so I'm going to give it to you, Sachin. Fake या fact? ये बिल्कुल फेक है. जैसे काफी सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसको हमें दिखाया है, और it is clearly the earth rising. Now let me just rewind a bit. One of the greatest images taken by humanity was actually taken on the moon. जैसे ही हम यहाँ से मून राइजिंग या सन राइजिंग के फोटोज खींचते हैं, सनसेट का फोटो खींचते हैं, तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने मून अर्थ राइजिंग का फोटो खींचा. And that is one of the greatest images you will ever come across in your life. So there is an image called Earth Rising, and you can Google it and can see it. I still get goosebumps. I must have seen it thousands and thousands of times. I still get goosebumps about that. But ये जो सीन है जहां पर अर्थ राइज हो रहा है वो बिल्कुल फेक है, वो गलत है. इट इज क्लियरली एनिमेशन. और देखिए, जब तक आप चांद पर नहीं पहुंचते तो वहां से इतनी क्लियर इमेज, मतलब HD क्वालिटी की इमेज आपको वहां से मिलना थोड़ा मुश्किल है. तो फर्स्ट रेड फ्लैग शुड बी दैट. दूसरा रेड फ्लैग ये है कि जब चंद्रयान मून के ऑर्बिट में भी नहीं, तब से ये images चल रहे हैं. तो how can you have images on the moon when Chandrayaan has not even landed on the moon, right? So these are certain things that you need to be aware of.
लेकिन ये बिल्कुल फेक है। बिल्कुल बकवास है. You're right. Even I'm looking at this image, goosebumps. It's stunning. It's just stunning. Amazing. Actually, this is not the image. Oh, wow. ये हमारे So पॉडकास्ट this में is मिशन है कि ये भी हमारा. yeah. So yeah, there is an image where the Earth is not in its full. Yeah. जैसे मून का shadow सन पे गिरता है और वहां पे एक्लिप्स जैसे होता है, वैसे ही अर्थ का जो राइजिंग का तो जो था वो if you just say I don't know whether this is the actual picture. There is one picture where the Earth has actually risen above the horizon, Yeah. and you can actually see that. But anyway, be that as it may, this particular thing was a fake video that was going around, और ये बिल्कुल बकवास. लेकिन ऐसे वीडियोस जो होते हैं ना, ऐसी जो अफवाहें होती हैं, ये एक्चुअली भारत का जो इमेज है उसको बढ़ाने के बजाय उसको घटाती है ना. बिकॉज वी हैव अचीव समथिंग रियल. वी आर ऑन द मून. वी हैव डन समथिंग दैट नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज डन, व्हिच इज लैंड ऑन द साउथ पोल. और ऐसी झूठी खबरें फैलाकर आप मतलब खुद को लाइक्स और रीट्वीट्स और रीपोस्ट्स आप करेंगे, लेकिन देयर इज नो पॉइंट. I want to show you another image which I have a doubt because a lot of people have been sharing this image since yesterday. Is it true कि ये जो हमारा विक्रम है, which is the rover, उसके जो wheels हैं, जो पहिए हैं, उस पर एक्चुअली एक इसरो और हमारे नेशनल एम्बलम का इम्प्रिंट है. ऑलराइट. एंड हियर इट इज. दिस इज एंड इट शोज लाइक जैसे ही रोवर लैंड होता है और एज वी स्पीक राइट नाउ, एज वी वर टॉकिंग थोड़ी देर पहले, इट्स एक्चुअली वो चक्कर काट रहा है राइट मून के. सो उसके जो टायर प्रिंट्स हैं वो ऐसे लगते हैं. इज दिस, इट सेज फैब्रिकेटेड, बट आई वांट टू आस्क यू सचिन. सो इसमें भी दो चीजें हैं. एक, ये जो वीडियो और जो फोटोज वायरल हुए थे, वो एक्चुअली इज अ प्रोटोटाइप ऑफ द एक्चुअल प्रज्ञान रोवर, which is now, as of 24th of August, is actually walking around on the moon. Now, let's remember that जब ये प्रज्ञान रोवर के टेस्ट चल रहे थे, तो उसके व्हील्स के ऊपर ये नेशनल एम्बलम, यानी कि हमारा जो अशोका का एम्बलम है, द लायंस, उसका एम्बलम और इसरो का लोगो वो टेस्ट ड्राइव कर रहे थे. तो शायद ये इमेज जो है वो उस टेस्ट ड्राइव से आया होगा. लेकिन इन एक्चुअलिटी ऑल्सो प्रज्ञान रोवर जो है, जो विक्रम लैंडर से अभी बाहर निकलकर अभी घूम रहा है, वो उसके व्हील पर हमारा नेशनल एम्बलम और इसरो का लोगो है. So it is not false that such a thing has happened, but this particular image was again circulated before Vikram landed on the moon. So there is no way that this could have done this could be real. Okay. तो ये जो इस संदर्भ में ये बकवास. Oh my God. Okay, so right now the only, अच्छा, हमने definitely चांद पे कदम तो रखा है ना? बिल्कुल. Yes. I mean, what do I say? I'm like, everything is fake. Everything's a lie. Okay, great. There is no lie. We've actually reached the moon. So congratulations, guys. लेकिन, okay, let's move on. And, चांद से चलते हैं सितारों की तरफ. And when we talk about सितारे, especially in a Bollywood context, my God, there's so much going on. It's a good time for movies right now. Let me be very, very honest. Because, पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि especially the Hindi film industry has been struggling to just prove, their worth. Unfortunately, बड़ी फिल्में बनी, लोग थिएटर नहीं आ रहे थे. But in the last couple of weeks with films like Gadar, people have come back to the theaters. Even वो Hollywood फिल्में भी हो, जैसे कि Oppenheimer हो या Barbie भी हो, the truth is people are coming to the theaters. अगले हफ्ते आने वाली है, of course, Dreamgirl 2 and all that. But the big one that's coming up again is a film called Jawan that includes Shah Rukh Khan. So our next story has, 2 stories actually. One talking about Shah Rukh Khan, the other one talking about Sunny Deol. क्योंकि Gadar already release हो चुकी है. I mean, no one can forget the impact of the first Gadar. I mean, the amount of nationalism, patriotism, theaters में जो गूंजी है. There are lines like, आज भी, because it's the classic sort of
I wouldn't say that it's the classic sort of separatist film at all, but it's a classic film जहां पर अगर आपको हीरो बनना है तो आपको दूसरे देश को नीचा दिखाना है. And that देश in question of course is Pakistan, because unfortunately it is the story of India, right? So there will be references to Pakistan Murdabad, but apparently in a theater in Bareilly जब यही डायलॉग सनी देओल बोल रहे थे, किसी ने थिएटर में चिल्ला दिया था पाकिस्तान जिंदाबाद इंस्टेड ऑफ हिंदुस्तान जिंदाबाद. इफ यू नो द डायलॉग्स वेरी फेमस, इट्स हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा. और उस बरेली की थिएटर में हिंदुस्तान में जब किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, अपेरेंटली अ फाइट ब्रोक आउट, जिसकी वजह से देयर आर इमेजेस एंड देयर आर वीडियोस सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया एज वेल. मैं तो उस थिएटर में थी नहीं सचिन, सो आई वुड नेवर बी एबल टू टेल वेदर और नॉट दिस हैपेंड और डिडंट हैपन. बट विथ योर एक्सपीरियंस, ये जो इमेजेस सर्कुलेट हो रही हैं, ओके, आर दीज इवन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, या क्या उनका संदर्भ भी यही है? देखिए, ऐसी इमेजेस जो हैं, आप और मैं हमारे शो में हर हफ्ते इसके बारे में, संदर्भ के बारे में बात करते हैं. सो देयर इज द थिंग इज दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. क्योंकि होता क्या है कि when it comes to nationalism, when it comes to issues such as Hindustan Zindabad या फिर Pakistan Murdabad, these become very emotive issues. और इसके वजह से लोगों की जानें भी जा सकती हैं. तो अगर आप झूठ फैला रहे हैं, सच अ थिंग डिड नॉट हैपन फर्स्ट, लेकिन अगर आप इसको फैला रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि आपके झूठ फैलाने से लोगों की जानें भी जा सकती हैं. कुछ एपिसोड्स पहले हमने मणिपुर के बारे में बात की थी और कैसे मणिपुर में झूठ की वजह से इतने लोगों की जान चली गई. और हु इज रिस्पॉन्सिबल फाइनली? क्योंकि अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करें, पुलिस में एफआईआर दर्ज करें, तो उसमें किसका नाम डालें? जिसका किस व्यक्ति ने इसको उसकी शुरुआत की थी, क्या हम उसे जान सकते हैं? किस व्यक्ति ने उसको 5 बार फॉरवर्ड किया था, और उस 5 लोगों ने किस 25 लोगों को फॉरवर्ड किया, और उन 25 लोगों ने कौन से 625 लोगों को फॉरवर्ड किया है? तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो कैसे हुआ है और उसका रूट कॉज क्या है, हम कैसे जान सकते हैं? सो if you want to spread nationalism, if you want to spread patriotism, you don't need to spread fake news. I mean, ये गलत बात है. और मतलब हम कितनी बार इस चुके कि लोगों की जाने जा चुकी हैं. और हम तो टू गेट अ थम्स अप ऑन योर व्हाट्सएप स्क्रीन, या फिर रिएक्शंस के लिए, या फिर इंस्टाग्राम में लाइक्स के लिए लोग ऐसी झूठी खबर फैलाते हैं. बट आई थिंक इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द एज दैट वी आर लिविंग इन, दैट वी आर मोर, हमको एक सोशल मीडिया वैलिडेशन चाहिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं, और हम एग्जिस्ट करेंगे तो हमें आपकी जो लाइक्स हैं वो आनी चाहिए, आपके जो रीट्वीट्स हैं वो आनी चाहिए, आपके व्हाट्सएप पे इमोजीज आने चाहिए वगैरह. बट अल्टीमेटली, लाइक आई सेड, आई मीन, आपने भी इसके बारे में कितनी बार अपने शो पे कहा है, इट्स जस्ट प्लेन रॉन्ग. Absolutely. All right, let's move on to our next story. Our next story involves a very interesting man, and that is Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan has a new strategy. वो अपने फिल्मों को अब प्रमोट करने के लिए इंटरव्यूज नहीं देने वाले. Well, but let me just say, शाहरुख खान इंटरव्यू दे ना दे, उनकी फिल्में धड़ाधड़ प्रमोट होती ही रहेंगी. Because in the spate of new articles, I saw a video, to be honest, and I was very excited. मैंने कहा, wow यार, what a great action sequence. Apparently, this is a leaked action sequence from the film Jawan. All right, it shows a man suspended on like what is called a safety harness, और वो safety harness को लगाए हुए एक बिल्डिंग के, जैसे कि स्पाइडरमैन जो होता है ना, वो बिल्डिंग के ऐसे नीचे स्केल करते हुए आते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिस मैन इज एक्चुअली कमिंग डाउन दिस बिल्डिंग, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंप्रेसिव स्टंट. उनको देखते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ओ वाओ मैन, आई कांट वेट टू वॉच एटली एंड शाहरुख्स जवान, लुक्स ट्रूली लाइक द बिगेस्ट एक्शन एंटरटेनर ऑफ 2023. मैं भी एक्साइट हो गई, मैं भी बहुत एक्साइट हो गई. मैंने कहा वाओ, चेक करते हैं. लेकिन क्योंकि अब मैं थोड़ी सी आपकी तरफ बन गई हूँ सचिन, तो मैंने भी जब मैंने चेक किया, so I found the source, and which I'm very happy to share. And the source is, of course,
एन एक्शन, मतलब जो एक्शन करते हैं, एक इंसान है जो एक्शन करते हैं, उनका नाम है मंसूर ए खान। आप उनको इंस्टाग्राम पर ढूंढ निकाल सकते हैं, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट वी डन। हियर्स द स्टंट ऑन आवर स्क्रीन्स, और आप देख सकते हैं कि सोर्स वीडियो जो है वो मंसूर खान का है। कहते हैं, आई परफॉर्म द स्टंट इन 2018 ऑन अ कैट टावर इन बैंकॉक फॉर बाग बंदी खेला। स्टंट रिस्की था, लेकिन क्योंकि स्टंट एक रियल लोकेशन पर परफॉर्म की जाने वाली थी, लेकिन एलन अमीन जी के साथ, उनकी टीम के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और सेफ्टी के साथ, वी मैनेज टू डू इट। सो इट वाज अ थ्रो बैक दैट एक्चुअली, जस्ट इमेजिन हाउ दिस हैपेंड ना। The universe is talking about Jawan. Okay, this stunt gets, just this man just shares it saying throwback. और इस स्टंट को उन्होंने देखा और कहा कि अरे ये तो जवान का है। I'm sure that this is not by the makers of Jawan. It should be, somebody else who's doing this. But just want to say that this is not Shah Rukh Khan. It is a Khan, but it's not Shah Rukh. It's Mansoor Khan. Are you interested in और that? ऐसे ही या और यही स्टंट जो है वो टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल में भी किया था, वो भी बुर्ज खलीफा के विंडोज के ऊपर। और आप और मैं जानते हैं कि टॉम क्रूज अभी 61 साल के हैं, लेकिन खुद अपने स्टंट्स करते हैं। तो ही हैड डन दिस स्टंट आई थिंक व्हेन ही वाज 54 or 53 or something, and now लास्ट ईयर ही डिड अ स्टंट फॉर द लेटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल, जहां पर उन्होंने बाइसिकल के ऊपर, सॉरी नॉट बाइसिकल, मोटर बाइक के ऊपर, he jumped from a cliff and opened the parachute, etc. Became a world famous stunt. In one of the movies, he jumped from one building to the other. He fractured his leg when doing that jump. Yet he got up and he started running because he wanted to do the stunt in one take. और उसके बाद वो 2 महीने तक he could not walk, लेकिन he did that stunt. So hats off to these stunt people. I mean, absolute courage. उनको पता है कि एक ही बात गलत हो गई तो उनकी जान जा सकती है उसमें, लेकिन फिर भी वो खुद स्टंट्स करते हैं. Many of the stars like Akshay Kumar, for instance, he does his own stunts many of the times. Tom Cruise does his stunts all the time. तो ये जो लोग हैं जो खुद अपने स्टंट्स करते हैं, I mean, absolute. Hats off to them. Yeah, really. Because you spoke about the Burj Khalifa, we were not going to talk about this, लेकिन we've just come off, हम आज 24 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहे हैं, and we're just 10 days since our Independence Day. And I just realized that, the Chandrayaan landing actually happened like 9 days after India's Independence Day. It's a great month, honestly. लेकिन because you spoke about the Burj Khalifa, there was actually an allegation on the Burj Khalifa this year, saying that यार Burj Khalifa ने इस बार पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया अपने Burj Khalifa. Every year, what Burj Khalifa does is it's a bit of a statement, right? वो इतना बड़ा बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए आप कोई भी, मतलब कल अगर जवान रिलीज हो रही है तो जवान की फोटोग्राफ वहां पर लग सकती है. पठान के टाइम पे दे लिट अप द बुर्ज खलीफा. नाउ बुर्ज खलीफा आल्सो डज दैट फॉर कंट्रीज, सो दे डू इट फॉर देयर नेबर्स, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया या पाकिस्तान. सो इंडिया का फ्लैग जो है हर साल ऑन 15th of August बुर्ज खलीफा पर वो प्रोजेक्ट करते हैं. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल ऑफ अस फील वेरी प्राउड. इस साल there was actually some sort of a complaint saying that Burj Khalifa has made a statement and not put the Pakistan flag. It's not true. I just want to bust that myth right here on the show. They did both. Yeah, they did India also, they did Pakistan also. So there you go. Did not display Pakistan flag on independence. It did. So just want to say, I wonder how people are fighting with a building. देखिए, जब जब नेशनलिज्म की बात आती है तो बिल्डिंग क्या, बकरी क्या, बकरी के ऊपर भी झगड़े होते हैं. बट वन ऑफ द थिंग्स आई नोटिस्ड आफ्टर चंद्रयान लॉन्च, अगर आप चंद्रयान लॉन्च का जो यूट्यूब का जो ब्रॉडकास्ट है देखिए, तो वहां पर ढेरों पाकिस्तानियों ने आके इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया. मतलब उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि इंडिया को गाली दी या फिर इंडियन साइंटिस्ट को गाली दी. हर एक पाकिस्तानी व्यक्ति जो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहा था, उन्होंने एक कमेंट पास किया कि कांग्रेचुलेशन इंडिया, यू डन अस प्राउड. मतलब ये जो एक फीलिंग है एक आम भारतीय में और एक आम पाकिस्तानी में, कि एक दूसरे की तरफ जो एक प्यार है, कि हमारा एक जॉइंट कल्चर है, हमारा एक
सिमिलर कल्चर है, सेम कल्चर। तो ये जो चीजें हैं, यू नो, आई थिंक दीज शुड कीप अस टुगेदर रादर देन द हेट्रेड, फॉर ईच अदर, जो एक पॉलिटिकल डिवाइड सा हो गया है। Absolutely. Now for our last story of today, let's अभी हमने फिल्मों की बात की है, हमने इसरो की बात की है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने पॉडकास्ट में आज अगर इतनी सारी बड़ी चीजों की बात करें? हाउ कैन वी लीव आउट क्रिकेट? एंड लेट मी टेल यू अबाउट cricket this time. We're not talking about the World Cup. We're talking about Heath Streak. And if you grew up in the 2000s, then you remember Heath Streak. He was the captain of the Zimbabwe team and quite a good looking man for that. मुझे याद है. Unfortunately, a couple of days ago, there was a news कि heat streak गुजर गए. And I'll be honest with you, when I saw that news as well, I was just like, oh man, I felt bad. But I was like, okay, RIP वगैरह वगैरह. लेकिन अगर 6 बजे ये न्यूज आई कि हीट स्ट्रिक जो है अनफॉर्चुनेटली गुजर गए हैं, then a couple of hours later at about 10 p.m. there was an update saying that वो नहीं गुजरे हैं. And I was just like, imagine news publications, man, चलो यार, हम तो एक sports publication नहीं है, लेकिन for any sports publication on that day, the pressure to cover a heat streak's passing would have been so high. And what if they would have actually gone and covered it? I think a lot of them did as well, बेचारे. या और हुआ क्या कि इसका जो सोर्स है वो भी एक बहुत ही फेमस जिम्बाब्वे क्रिकेटर हैं, उनका नाम है हेनरी ओलोंगा। और क्योंकि हेनरी ओलोंगा और हीथ स्ट्रीक एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं, काफी सारे मैचेस खेल चुके हैं। और हेनरी ओलोंगा इंटरेस्टिंगली इज नाउ बिकम अ बिग सिंगर, ही इज अ गॉस्पेल सिंगर, एंड Wow. ही टुक पार्ट इन अ रियलिटी शो। और जितने वो फेमस क्रिकेट में नहीं हुए थे, उतने फेमस वो एज अ सिंगर हुए हैं। तो हेनरी ओलोंगा ने ये बात चलाई कि उन्होंने, देखिए, हीथ स्ट्रीक को कैंसर हुआ है, ये सच बात। तो बहुत लोग जब उन्होंने सुना हेनरी ओलोंगा के बारे में, हेनरी ओलोंगा के ट्वीट के जरिए कि हीथ स्ट्रीक गुजर गए हैं, तो सारे लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, मैंने भी किया, क्योंकि मेरे पास जिम्बाब्वे में कौन सोर्स है? हेनरी ओलोंगा इज द टीममेट ऑफ हीथ स्ट्रीक। और हीथ स्ट्रीक अगर वो कहेंगे कि उनका उनका देहांत हो गया, तो हम लोग बिलीव करेंगे। लेकिन 4 घंटे बाद उन्होंने खुद वही ट्वीट को बताया कि उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि देखिए, हीथ स्ट्रीक ने खुद मुझे बताया कि वो जिंदा है। तो And this तो the बेचारा। screen, it's on the screen right now. I really या appreciate Henry Olunga जिन्होंने ये WhatsApp का एक स्क्रीनशॉट डाला है जहां पर हीट स्ट्रीक कह रहे हैं very much alive. Please revert this run out immediately, buddy. Okay, that's so good to hear this thing, Guru legs quickly. You died overnight, brother. They're obviously having a laugh. And then he या tweeted saying, I can confirm. So are you saying that the original source was also Henry Olunga? यस। Oh my God. और हेनरी और हेनरी ओलोंगा ने उसके बाद उस ओरिजिनल ट्वीट को डिलीट किया। लेकिन उसमें काफी सारे दुनिया के सारे जो क्रिकेटिंग पब्लिकेशंस हैं, अखबार हैं, सारे लोगों ने हेनरी ओलोंगा को कोट करके पूरी Oh ये my खबर God. चलाई कि हीथ स्ट्रीक का देहांत हुआ है। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। सी, how do you even confirm, whether this is correct or not? When when Henry Olanga, it's, I hate to use this comparison, लेकिन अगर कोई इंडियन क्रिकेटर का देहांत हो जाए और उनका जो Absolutely. Like टीममेट है वो suppose, कहे, yeah, suppose हाँ, like हाँ, somebody like Vinod Kamli says something about Sachin, or Sachin says something about Vinod या Kamli. You'll believe it. एग्जैक्टली, या तो पूरी दुनिया ने, नॉट अ सिंगल पर्सन क्वेश्चन हेनरी ओलोंगा। तो इसी की वजह से देखिए, हमने पिछले हफ्ते में भी, पिछले एपिसोड में भी हमने इसके बारे में बात की थी, जब आपने द एलिफेंट विस्परर्स के बारे में जब हमने बात की थी ऑफलाइन। तो आपने खुद गुनीत मोंगा से जाके बात की, उनसे कंफर्मेशन लिया, और उसके बाद ही हमने वो शो बनाया। तो all that journalists need to do is, call up, the people who are either affected by this or, are involved in this. Absolutely. I think that's about all the time that we have for this week's episode. It was a fun episode for sure. Lots of things that we covered. Lekin please, every week, just come back to us and check in with us about all those things जो आप समझते हैं, like that imprint, the ISRO imprint. ये image इस वक्त इतना ज़्यादा share हो रहा है that it'll just become. What worries me the most is that when I look back in time, अगर मुझे किसी चीज के बारे में कोई information चाहिए,
तो आई गो एंड पिक अप द न्यूज़पेपर ऑफ दैट टाइम, राइट? और हमारे पास एक्सेस है जर्नलिस्ट, एज मीडिया पीपल, तो हम देखते हैं 1993 में क्या हुआ था. Imagine like 20 years from now, people will, actually look at all the archive, and all of this is going to be on the internet. उस वक्त भी, okay, it'll be so tough to say कि क्या झकास है और क्या बकवास है, and that is why I think doing this is important for us. हम अगले हफ्ते लौटेंगे of course with lots more news that we will say is fake. लेकिन तब तक के लिए of course we're going to request you, if you have a piece of news, before sharing, think twice, count to 10 before you get angry or share something. And you can find us on social. मैं Rotalks हूँ, ROTALKS, and Sachin Kalbag is Sachin Kalbag on Twitter. हम आपसे मिलने आएंगे अगले हफ्ते right here. This is a podcast brought to you by HT Smartcast, and a big shout out to our teams who do such great work with us. Thank you so much, Sachin. It was great chatting with you this episode as well. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.